गुरुदेव, हम आपको मिस करते हैं तो रोते हैं, तरसते हैं और कविताएं लिखते हैं, गीत गाते हैं, और जब आप हमें मिस करते हैं तो आप क्या करते हैं? देखिए, मिस करना ही एक कृत्य हो गया, तो मिस करते ने क्या करते हैं, ये कोई पूछने की बात है? हम तो आपको देखते ही रहते हैं, और क्या। गुरुदेव, निर्गुण की उपासना में भक्ति होती है क्या? सगुण उपासना से ही भक्ति जागती है, वो चल चल के फिर निर्गुण उपासना में बदल जाती है। देखो, एक सगुण, एक मूर्ति के सामने खड़े होते हो हाथ जोड़ के, ये सगुण है। देखिए, मूर्ति के पास आते ही मन को एक सुकून मिलता है, ऐसा लगता है भगवान सामने खड़े होते। क्या करते हो? आंखें बंद कर लेते हो। आंखें बंद करने से निर्गुण, आंखें खोलोगे तो सगुण। सगुण साकार, निर्गुण निराकार, दोनों साथ ही साथ है। जब निर्गुण निराकार में आसानी से पहुंच नहीं पाते हैं तो सगुण साकार। सगुण साकार में क्या करते हैं? पहले तो पूरा आकार, फिर बोलते नहीं सिर्फ चरण का देखो। देखो, कई मंदिर में शुरू में या आखिरी में कहीं जब प्रदक्षिणा करते सिर्फ चरण होता है, चरण पादुका होते हैं। सिर्फ चरण का स्मरण करो, बस काफी है, उसी से तुम तल्लीन हो जाओ। कहीं कहीं सिर्फ मुखड़ा ही होता है, सिर्फ चेहरा ही होता है, और कुछ अंग नहीं दिखता है। चेहरा देख के फिर ऐसे शांत हो। तो इस तरह से सगुण साकार का अपना प्रयोजन है, वो शुरू भक्ति के लिए। फिर वो भाव में आते हैं तो निर्गुण निराकार तक पहुंचते हैं। और निर्गुण की भक्ति श्रेष्ठ भक्ति है। निर्गुण की भक्ति ध्यान में जब जाते हो, निर्गुण भक्ति में जाओगे। हाँ? कब तक यहाँ कुछ महिलाएं मूर्ति लेके घूमती रहती है, ठीक है, वो शुरू में खिलौना लेके बच्चे खेलते हैं, ऐसे बड़े होके थोड़ा मूर्ति रखे उसको खाना खिलाओ, ये करो करो, सब करते रहते। मगर थोड़ा उससे आगे बढ़ो, आगे चल के देखो तो वो कृष्ण, बाल कृष्ण तुम्हारे हाथ में रखा हुआ ये मूर्ति में नहीं है, वो तुम्हारे दिल में बैठे हैं, तुम्हारी चेतना में घुस गए, ये समझ में आता है। तो वो निर्गुण निराकार में बदल जाता है। कुछ लोग तो जिंदगी के आखिरी दम तक सिर्फ सगुण साकार में ही पड़े रहते हैं, उनको मुक्ति नहीं मिलती। सगुण से निर्गुण में जाना है, कहीं तो बाहर का सारा आधार छूट जाए, तभी तो भगवान की जो प्रत्यक्ष अनुभूति होएगी। भगवान की अनुभूति के लिए सब आधार, जिसको आधार पकड़ के बैठे, वो सब छूटना पड़े। जैसे आप लोग सहज ध्यान करते हो, क्या मंत्र लेके शुरू करते हो, फिर जैसे ही मंत्र छोड़ते हो फिर लगती है वो समाधि, चेतना, है ना। मंत्र की आवश्यकता भी है और मंत्र को छोड़ना भी है, ऐसा है। मीराबाई गाती हैं, बार बार बलि जाओ। गुरुदेव, जब भक्त एक बार समर्पित हो गए तो फिर बार बार क्यों बलि जाओ? मन बार बार उठ जाता है। जब भी मन उठ जाता है, मन खड़ा हो जाता है, फिर उसको बार बार फिर समर्पण करना पड़ता है। इसलिए इतने बार नमा 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 करते रहते हैं। हाँ, भोजन एक बार करने से तृप्त थोड़ी ना होता है ना, ऐसे ही मन भी एक बार में पूरा समर्पित कहाँ होता है मन। तो मन का खेल जो है वो बार बार बनी रहती है, इसलिए बार बार बलि जाते हैं। सही तो है। किसी किसी में परिवर्तन तुरंत आ जाता है, पर किसी किसी को बहुत समय लगता है। परिवर्तन में भेद क्यों है गुरुदेव? परिवर्तन को और तेज कैसे कर सकते हैं? अरे परिवर्तन हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है।
बीज फूट जाए, अंकुर निकल जाए, बहुत बड़ी बात। हाँ, लगता है आम का पेड़ बड़ा होने में समय लगता है, मूंग का दाल तो तुरंत तुरंत आ जाता है, 1-2 दिन में। 1 महीने भर में मूंग पूरा पौधा खड़ा हो जाता है। तो अलग अलग है स्वभाव, अलग अलग उनका वो है। इसीलिए करते जाओ, तुम साधना करते जाओ, सत्संग में रहते जाओ, है ना, और चीज़ों से निवृत्त होते जाओ, तृप्त होते जाओ, ये आवश्यक है। जब तक हम तृप्त नहीं होते, जब अतृप्ति मन में गूंजती रहती है अपनी ध्वनि को, फिर हमें हर चीज़ में थोड़ा जो है नीरसता आने लगती है। फिर कभी आने, अरे सब छोड़ो, मैं थक गई, मैं ये हो गया, मैं थक गया, इस तरह से तुम लोगों की शुरू कर। इसका मूल कारण है क्या? तुम लोग आशा को लेके बैठे हो, इच्छा लेके बैठे हो, ख्वाहिश को लेके बैठे हो। चाह मरी चिंता मिटी तो बने आप शहंशाह। गुरुदेव, जब कोई भक्त आपके ऊपर गुस्सा होता है या आपकी शिकायत आपसे ही करता है, तो आप क्या करते हैं? मैं पहले सोच के थोड़ी ना करता हूँ, उस वक्त जो करना वही करता हूँ। मेरा आज तक कोई टॉक पहले से निर्धारित नहीं होता, या किसी से संवाद, किसी के साथ हम क्या करते हैं वो मुझे भी नहीं पता रहता। उसी वक्त जो होना है वो होता है, ठीक है। चाहे उससे कोई खुश हो ना खुश हो, मगर जो होना वही होता है। और वो मंगल कार्य की होता है, ये तो गारंटी। उससे मंगल ही होगा, अच्छा ही होता है। Gurudev, in the new artificial intelligence age, power seems to be concentrated in the hands of few who are determining the direction of progress. Some of their decisions seem to be contrary to dharma. Example, blind pursuit of only efficiency at the cost of harm to people and environment. What are ways by which we can create a balance to this situation? It's the people who create such situations, people who are not aware, who don't have broad vision, who don't have long-term vision. For the short-term gain, they play all sorts of things, sometimes very dirty games, and unmindful of the impact that they may have on the long term good of human society. These challenges have been there from past millenniums, nothing new. It's now here that our people should wake up, and they should, be united and raise their voice. Raise their voice against corruption, raise their voice against all unethical practices. This is necessary. And also adopt prayer as your part. Whatever you cannot do, you sincerely pray for it, ask for it. Your prayer will be heard. Gurudev, what is the most important lesson that Indian knowledge systems can share with the world on sustainability and climate resilience? There are many things. If you, even now, if you simply visit any remote tribal village, you will be astonished how clean they keep their environment. Their roads, their gutters are clean, their roads are clean, their homes are kept very clean. We learn from forest. You go in the forest, you don't find
dead bodies lying around. Nature has its own way of cleansing everything, recirculating everything, recycling everything. So we need to be more observing the nature, how it rejuvenates and recycles itself, and aid towards it. I think more than before now this awareness has really come. About plastics, single-use plastics, how we discard them. And then now that art of living, as our SSRDP, our Rural Development Project, has come up with the eco-friendly bags, that the plastic, it looks like plastic, does all the job of plastic, but it's eco-friendly, it just dissolves. Someone just in the darshan line showed me, they have developed sanitary pads also for women's hygiene, and that's eco-friendly, it dissolves in the water. So we need to learn more things that would help our planet to recycle itself. No? Recycling water, cleaning the water. And our ancient system of Ayurveda is very much in alignment with sustainable development. If you use Ayurvedic stuff, whatever soap or this thing, it is eco-friendly. It just matches, sustainable development, doesn't pollute the environment. Because it's chemical, there are no chemicals, there is no added those harmful things in it. So, like that, Ayurveda is something that contributes. Similarly, in the alchemy also, if you see the iron pillars of ancient temples, and they have never rusted. They stand there, solid, and they tell a lot about how, our ancient system and the modern science development can coexist and correlate very well. Right from the architecture, building materials, and the shape and form of buildings, how they are all so aligned to nature is something which is startling. Anyone studies this would find, wow, never thought about it. When tsunami hit the coast of India, all the modern buildings were blown away, but those built in the ancient time with the stone, nothing happened to them. They stood the test of time. There was a big disaster in Kedarnath. You would wonder, all other buildings all around the Kedarnath shrine was all destroyed, except the temple that stood unfazed. Just stood so whether it is agriculture or medicine or architecture, all these from the ancient knowledge system can be adopted, for they are very, very eco-friendly. Very eco-friendly. Yeah. Gurudev, how can Indian knowledge systems build future skills, systems thinking, climate resilience, ethics, innovation, etc., so it supports India's competitiveness rather than being treated as heritage content? Now, this is for scientists to look into it. You see what from that you can adopt. You must have a science. Just because something is old, it doesn't need to be always good. Just because something is very new doesn't need to be good all the time. So you should not
link that which is useful to ancient or modern. You should simply see objectively and adopt what is best for the benefit of mankind. Don't discard things because it is just a heritage stuff, or you don't have to glorify something because it's heritage thing. You have to be very practical, very pragmatic in your approach, in your thinking. And that is again, pragmatic thinking is an ancient system as well. Yeah.